Hello students, we are into the chapter global supply chain, and today we are going to discuss one new concept and subtopic in it which is very important from exam point of view, that is factors and forces affecting global supply chain management. Now when we discuss the factors or forces, these are the marketing factors predominantly which global supply chain needs to take into consideration. So, what comes into the macro environment or the market related forces or market related factors which we need to understand, and from the perspective of various experts, these are being bifurcated and divided into four subtypes. First one, we have political and legal forces. Second, cost related forces. Third, market forces. And fourth, technological forces. Now, in this ambit, all these ambits like political ambit, cost related ambit, market forces ambit, technological ambit, we have other things also, which are the subcomponents of all these forces. So, what we are going to consider is that what thing comprises as a part and parcel of all these forces, what could be examples under each force, that we are going to learn more precisely today. We'll very first start with political systems or political legal forces. So we have political system, which is a country's system of politics and government. Whatever the country is following the system of government, or for that matter whatever political features are involved, all those things will come under the political forces. So what are the peculiarities or the subcomponents of all such things? जैसे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट फोर्सेस सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, लॉज बनाएगा, उसमें इंस्टीट्यूशंस होंगे जो उस लॉ को अबाइड कराने में मदद करते हैं, उसमें एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट होगा टूवर्ड्स द कैपिटलिस्ट, टूवर्ड्स द सोशलिज्म. हर एक पॉलिटिकल सिस्टम का फिलॉसफी होगा बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स. तो ऐसे केस में फिलॉसफी ऑफ ईच पॉलिटिकल सिस्टम influences the policies that govern the local economy and business environment. गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड में, हम सब जानते हैं कि क्योंकि इंडिजीनियस इंडस्ट्री को बचाना है, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है, तो हमने right from before LPG देखा था, there were n number of tariffs and quotas, which custom duties, all those were involved in order to promote import substitution and also export promoting goods. So what happens that टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने इसको एलपीजी के तहत भी थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा सा नहीं काफ़ी. अगर हम लोग देखें अलग अलग सेक्शंस और सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ किया, कहीं पे 51%,
कहीं पे 78% likewise. And whatever government steps are taken, they are based on the preservation of the social, cultural, economic structures of the country. So when we talk about voluntary export restrictions, when we talk about tariffs, when we talk about subsidies, when we talk about import quotas, currency control measures like LERMS था पहले, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम था. उसके बाद अगर हम देखें तो FDI में भी हमने देखा फेमा एंड फेरा एक्ट था. लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, मतलब अगर कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में तो उसको रॉ मटेरियल इंडिया का लेना पड़ेगा. वो काफ़ी सारे MNCs पे ये रिक्वायरमेंट डाली गई थी. या लोकल एरिया से लेबर ड्रॉ करना है. एंटी डंपिंग रूल्स हैं ताकि फॉरेन में ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो यहाँ पे शॉर्टेजेस होते हैं, तो एंटी डंपिंग रूल्स बनाए जाते हैं. एक्सपोर्ट फिनेंसिंग की जाती है. फ्री ट्रेड जोन्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सेज, ये सब चीज़ें जो हैं ये की एट्रीब्यूट्स हैं, की पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट के, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो होती हैं टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रेड सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेड. सो all these things will come under the umbrella heading that is political and legal forces. इसको लिखना कैसे है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है टैरिफ, सब्सिडीज, फ्री ट्रेड एरियाज, ट्रेड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स के बीच में, और हमें बताना है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होते हैं. तो जैसे टैरिफ की बात की जाए तो टैरिफ क्या है? टैक्सेस जो लेवी करते हैं इम्पोर्टेड गुड्स पे. और टैरिफ का भी अगर हम लोग देखें तो वो दो टाइप में आता है. स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो लेवी किया जाता है एज अ फ्लैट फी, और दूसरा स्पेसिफिक टैरिफ पूरी तरह से फ्लैट फी के साथ इम्पोज किया जाता है. और दूसरा एड वोलेरम टैरिफ, जिसका मतलब है जितना वैल्यू होगा पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का उतना टैक्स लगेगा. और स्पेसिफिक टैरिफ किसी किसी कमोडिटी में पहले से ही तय होता है विद इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और द वॉल्यूम और द वैल्यू. सो मेनी गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू लेवी add वैलेरम टैरिफ टू रेगुलेट इंपोर्ट्स एंड रेज रेवेन्यू. तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक टैरिफ के बजाय एड वैल्यू वाला टैरिफ लगाती है ताकि वैल्यू के ऊपर जो टैरिफ मिलता है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करता है. तो इसे इम्पोर्ट हमारा कर्व होता है एक तरह से. फिर आता है सब्सिडी. अभी सब्सिडी क्या है कि गवर्नमेंट पेमेंट मेड टू द प्रोड्यूसर्स. Subsidies can be in the form of tax holidays, less interest loans, concessional loans. Subsidies बहुत बार कैश ग्रांट्स में होती है बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. गवर्नमेंट का इक्विटी पार्टिसिपेशन होता है. गवर्नमेंट के रिसोर्सेज डायरेक्टली मिलते हैं किसी किसी इंडस्ट्री को जो हैवी इसमें बेसिक स्टील वगैरह इंडस्ट्रीज जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसमें से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है. तो ऐसे केस में हम देख रहे हैं सब्सिडीज भी एक तरह से पॉलिटिकल या लीगल फोर्सेस में आता है क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड है. देन वी हैव फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट्स. सो फ्री ट्रेड जोन तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों को हमने देखा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनल इंटीग्रेशन. तो इट स्टार्ट्स विद फ्री ट्रेड जोन्स ओनली बिटवीन टू कंट्रीज. So many countries they establish free trade zones in specific geographical areas जिसमें टैरिफ, टैक्सेस, कस्टम्स, प्रोसीजर, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, रिड्यूस होते हैं ताकि उन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिले. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था नाफ्टा का, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा पार्टिसिपेट करते हैं. वो तीनों अगर कोई एक सप्लाई चेन पार्टनर्स है एक दूसरे के लिए तो वो क्या करेंगे, आपस में जो भी ट्रेड करेंगे उसमें वो लोग टैरिफ और कोटास वगैरह को रिलैक्स कर देंगे.
देन वी हैव ट्रेड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. अभी ट्रेड प्रोटेक्शन में क्या होता है, सेम बात हो गई कि many countries they still require a certain percentage of product or item to be manufactured and assembled in their own country. So to conduct business in some countries a local firm must be used as domestic partner. मतलब एक तरह से सप्लाई चेन पार्टनर जो है उसको लोकल फर्म्स को बनाया जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रेड जो होगा वो फ्लरिश होगा. तो दीज आर सर्टन things which comes under political and legal forces, like we have exchange rate, we have free trade agreements, we have tariff system, we have trade protection mechanism. Then talking about cost related factors. Now when we talk about cost related factors, there are certain factors which are based on the cost consideration. And now cost is involved where? Cost is involved in many places. In marketing, finance, economic divisions, apart from logistics operations. So what things are taken into consideration which involves them with the cost factor? See, one of the basic element or the basic strategic decision is location decision. So location of the firm, location of any facility, इसमें बहुत सारा एक तरह से हम कहेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन. क्यों है? क्योंकि लोकेशन बार बार बदल नहीं सकते किसी फर्म का या किसी वेयर हाउसिंग का, और उसके अलावा उस लोकेशन के साथ देयर आर मेनी कॉस्ट एडवांटेजेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस फॉर दैट मैटर विच एग्जिस्ट. So we have location of facility which has significant impact on different types of cost, like direct cost, indirect cost, fixed and variable cost. And organizations का main मकसद क्या है कि कस्टमर को lowest possible cost में goods दें तो कस्टमर खुश होगा, and that customer will be retained with the organization. So these people who are industrialists in supply chain, they are taking logical approaches for selecting the best location in order to evade the cost or lessen the cost. Cost burden कभी आएगा सबसे ज़्यादा जब ये लोकेशन जो डिसीजन लिया जाएगा लोकेशन बेस करने का किसी यूनिट को, किसी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को या वेयर हाउसिंग को, वो अगर काफ़ी मार्केट से दूर होगा, कस्टमर प्लेस से दूर होगा, या उसमें काफ़ी सारा अगर हम देखें तो फ्लो का कॉस्ट आ जाएगा. तो ऐसे केस में इवन फॉर दैट मैटर अगर कहीं पे एक यूनिट स्टार्ट करना है तो उसमें अगर प्राइम लोकेशन देखा है जहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ईजीनेस होता है, तो उसमें भी हमने देखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा और कहीं कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगा. मतलब लेबर्स को पहुंचने में दिक्कत होगी वो पर्टिकुलर एरिया में, लेबर्स विल डिमांड मोर wages, so that will become variable cost. So location is of prime importance. Next is cost of labor. Now as economy begins to improve, increased demand will put additional strain on already stressed industry. अभी ये तो हमें मालूम है जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रेन भी पड़ेगा, इंडस्ट्री स्ट्रेस आउट होंगे. बिकॉज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लेबर डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा. सो व्हाट हैपेंस अगर लेबर कॉस्टली होगा, व्हाट विल गो रॉन्ग, व्हाट थिंग्स विल बी there, your cost will unnecessarily, product cost will increase and these will put the strain on the industry and these industries will pass strain on the customers. So labor cost is also very very important. Now say for example if you want skilled labor, again there is a shortage of skilled labor and it will be costly affair also. So cost related factor में cost of labor is also
having a very important role. Next, if we talk about, we have cost of production also. Now cost of production is made by all those elements like uh, direct cost, prime cost, overheads, factory overheads and everything. So COP will contain all the cost which are involved in making or producing the units of production. So as far as wastages have to be reduced, रॉ मटेरियल, यस, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके लिए भी बढ़ता है बिकॉज जो रॉ मटेरियल सोर्स किया जाता है, प्रोकर किया जाता है, वो भी अगर महंगा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा. अगेन अगर हम लोग देखें द स्विच ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द मैनुअल लेबर एंड द मशीनरी, वी हैव सीन दैट व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इट डज इट हैव ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देन वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब सेल करने के लिए जो कंपनी खर्चा करती है, तो सेल्स ओवरहेड्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, वो सब चीजें भी कॉस्ट रिलेटेड फैक्टर्स में, फोर्सेस में आएंगी. सो cost related factors, forces में we have locational decisions, we have cost of labor for that matter, we have cost of production altogether, putting the manufacturing cost together, cost of sales, how to publicize, how to promote goods, uska cost. Then we have market forces. Now market forces में आ जाता है competitive forces, demand pattern, global channels and socio-cultural factors. So market forces में हमने देखा है कि for any company which is global in nature, उनका अगर हमें मेजर करना हो सक्सेस, तो वो ये है कि वो कितना मार्केट पेनिट्रेट कर रहे हैं by reaching the customers in different countries. So what happens for these multinational, it is very much obvious that decision has to be taken regarding the procurement, regarding the distribution. And considering the market nowadays, we have global strategies going on for global supply chain partners. So most of the clients are expanding internationally and focusing their advertising budgets on one or two globally present agencies. मतलब अगर advertisement करनी है अलग अलग nations में, तो we have to take help of agencies, marketing or advertising agencies which are globally connecting all the customers. So same pattern हमें देखना पड़ता है logistics में भी, कि कौन कौन से लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे, वेदर इट विल बी कंट्री बॉन्ड, क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स, ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर्स. व्हाट विल हैपन, दीज थिंग्स विल गो ग्लोबल. सो ग्लोबली प्रेजेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ग्लोबली प्रेजेंट लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, ग्लोबली प्रेजेंट योर सप्लाई चेन पार्टनर्स की हेल्प भी लेनी पड़ती है. तो उसमें जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हमें स्टडी करने पड़ेंगे. तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में या कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में क्या होगा, कितना कंपटीशन एक कंपनी फेस कर रही है. जितना ज़्यादा कंपटीशन उतने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे एडवर्टाइजिंग के, उतने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे कस्टमर्स तक पहुंचने के. तो जाहिर सी बात है एजेंसीज और लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. सो कंपटीशन डिटरमाइन करेगा मैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. फिर उसके बाद वही चीज आ जाती है डिमांड पैटर्न, डिमांड प्लानिंग. डिमांड पैटर्न हमने पहले भी पढ़ा है. व्हाई, बिकॉज इट इज द फोरकास्टिंग के हेल्प से ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. हमने फोरकास्टिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी देखा है. उसमें से हम डिराइव करते हैं कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल डिमांड इन द फ्यूचर इन प्रोबेबल मार्केट्स वेयर दिस ग्लोबली वी आर सेलिंग गुड्स. देन when we talk about global channel, so what will come in global channel, we all know that all supply chain network members, they will be scattered over geographical area and everyone has to adapt to each other and they have to optimize their performance also so as to last में
क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, ये तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन। तो ऐसे केस में एक तरह से ग्लोबल चैनल्स जो बन रहे हैं वो भी, जैसे आपका रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन की तरह और से आ रहा है, ये सब सप्लाई चेन पार्टनर है आपस में। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका ग्लोबल चैनल अपने आप में इतना कॉम्पिटिटिव, इतना ज्यादा ग्लोबलाइज है that you have to take care of the environmental condition existing in each and every country. Therefore it is given under market forces. Then we have socio-cultural factors. Now what is socio-cultural factors? हमने ग्लोबल सप्लाई चेन करते हुए उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स. व्हाई दीज थिंग्स कम्स अंडर ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट फोर्सेस? बिकॉज when we are developing and implementing anything, any strategy globally, we have to consider the social and cultural factors which are existing in various countries. So their customs, their lifestyles, their values which defines the society are example of socio-cultural factors. और जब भी हम लोग बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स की, तो उनका एजुकेशन, उसका एस्थेटिक्स, लैंग्वेज, लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका मटेरियलिस्टिक कल्चर, उनके वैल्यूज, एटीट्यूड्स, ये सब आ जाते हैं कल्चरल एस्पेक्ट्स में. इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था मैकडोनल्ड्स का. अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट, वो भले ही मैकडोनल्ड्स स्पेशलाइज करता है बर्गर्स बनाने में, लेकिन जब भी वो इंडिया आया तो उसने एक कंसेप्ट निकाला, बर्गर्स की जगह एक और चीज जैसे बर्गर के ही मटेरियल से बनती है, उसको नाम दे दिया मैक आलू टिक्की. नाउ टिक्की इज नोवेयर द वर्ड और द प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया. So they adapted to our culture, they adapted to our language, they adapted to our preferences. So people who were avoiding junk food, when they heard this word tikki, they somewhere has the familiarity with the nomenclature. So what happens if you are global? You have to consider the socio-cultural factors of that nation, which will prevent you from facing any kind of resistance or reluctance from the customers to prefer your product. Then we have technological factors. Now application of ICT or IT in supply chain management are considered under technological factors. Why do we need information technology in supply chain management? Because it is very obvious that global supply chain brings with themselves the supply chain partners which are scattered over the globe. So they have to connect to each other, and timely information is very much required. So if we talk about Dell, if we talk about IBM, these have people as supply chain partners at various places in the world. So imagine if they don't have the accuracy and timeliness and sharing the information, they will lose their visibility, they will lose their accountability. So ERP solutions, SAP, and many of the supply chain solution based technologies are being used for keeping pace with all people who are involved in production, who are involved in procurement, who are involved in distribution. So to improve overall production
efficiency. A manufacturing company must have a clear view of current stage of in production products. They have also to anticipate any potential problems or delays, and they have to be able to align production schedules accordingly. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, उनके बॉटलनेक्स और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से ही, या डिलेज जो आने वाले हैं उनको पहले से ही प्रेडिक्ट कभी करोगे जब भी आपके पास टेक्नोलॉजी होगा उस पर बात करने को, उस पर काम करने को. सो वी हैव ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स. कैसे ग्लोबली सप्लाई चेन सॉल्यूशंस बदल रहे हैं कंट्री टू कंट्री, उनके साथ पेस रखते हुए वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी आईटी हमें परचेस करनी पड़ेगी, और हमें इक्वली इन्वॉल्व होना पड़ेगा रिसर्च एंड इनोवेशन में भी, क्योंकि इससे रिसर्च, लगातार रिसर्च एंड इनोवेशंस जो है वो हमारे सामने ऐसे फैक्टर्स लेके आएंगे जो हमारे अगेन हमारे क्यूसीडी, क्वालिटी कॉस्ट डिलीवरी को एनहांस कर सकते हैं. इनका हमने बात भी किया था टेक्नोलॉजी का एंड सप्लाई चेन का. तो वी हैव सीन many tools which are used nowadays like tracking systems in vehicles, crowd shipping, we have RFID, we have 3D printing, augmented realities. So all those things also exist in international claimed businesses. So technological forces. So we have in all 4 forces put together called as forces or factors affecting global supply chain management, and these are bifurcated into 4 types, namely political legal forces, which comprise of exchange rate, free trade arrangement, tariff systems, trade production. Then cost related factors में we have location based cost, we have cost of labor, cost of production, cost of sales or cost of goods sold. Then market forces, we have competitors, policies, competing environment, demand planning or demand patterns in abroad, global channels, socio cultural factors, technological factors में we have global technological changes or shifts, research and innovation. Talking about the theory part, we are doing today factors and forces affecting global supply chain management. So when discussing the globalization process, the most frequently mentioned market force is the homogenization of customer needs. कस्टमर नीड्स जो है उन्हें सेटिस्फाई करना है, और उन्हें जितने भी डिस्पर्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो कंसीडर करते हैं वैरायटी ऑफ रीजनल डिफरेंसेस जिनका असर पड़ना नहीं चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, या पॉजिटिवली वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके. तो ऐसे केस में we have all these forces like political and legal forces, which is extensive and complex, and it is the country's system
of politics and government. It oversees a comprehensive set of rules, regulations, institutions, attitudes, the philosophy of each political system on individual and group rights, as well as the role of government. So, noteworthy things, the synoptic things which needs to be remembered is role of government, set of rules and regulations, then tariff, subsidies, import quotas, voluntary export restrictions, currency controls, local content requirements, anti dumping rules, export financing, free trade zones, administrative policies. All these will be examples or key policy areas in which the politics or government is creating rules and regulation to control and manage trade. Then tariffs. One by one, tariff, subsidy, free trade agreements, trade protection mechanism. We have to just elaborate all these four. So, tariff are taxes levied on import goods. Subsidy is the government payment made to the producer. Free trade areas or agreements are free trade zones in between the countries. Trade protection mechanism involves how the countries are protecting their own indigenous industries. Under cost related factors, again, we have location decision, cost of labor, which we need to elaborate. So, all the components like direct, indirect, fixed, and variable cost, these will be always considered for any operation, for production also. And cost of labor, obviously, मैनुअल लेबर और टेक्नोलॉजी उसमें ट्रेड ऑफ बताएगा एंड स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर के बीच में. देन मार्केट फोर्सेस की जब भी बात करें तो मार्केट बनाना है अब्रॉड तो क्या देखना पड़ेगा, ग्लोबली प्रेजेंट एजेंसीज देखने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी, ग्लोबल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री लर्न स्टडी करनी पड़ेगी और ग्लोबली ऑपरेटिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर भी चाहिए. उसमें ही वी हैव कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, वी हैव डिमांड पैटर्न. मार्केट फोर्सेस में सबसे पहला कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, कितनी कंपटीशन है, डिमांड प्रेडिक्शन, ग्लोबल सप्लाई चेन और सोशो कल्चरल फैक्टर्स. Then we have टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. उसमें information technology and supply chain needs to be understood. So when we talk about global perspective, directly or indirectly it is touching all these areas. Market and competition is there which needs to be considered. Cost factor needs to be understood. Technology at the disposal of supply chain partners needs to be highlighted and been brought about for the difference and deviation जो है उनको निकालने के लिए. Culture of the people needs to be studied. Politics and economy, infrastructure for that matter, for logistic services, and all these things together, put together, becomes the global perspective of supply chain management forces.
So in this chapter we have discussed global perspective of SCM, understanding measures to evaluate efficiency in global supply chain management, understanding different approaches in global supply chain management, and today we have discussed global market forces. Lastly, we have identifying and understanding the form of network models. So, types of global chains models we are going to discuss, network models we are going to discuss next lecture. And so far, we have discussed definitions of SCM, features of FCM, SCM process, innovation and supply chain management, forecasting and supply chain management, forecasting techniques like qualitative, quantitative, different examples under each and every qualitative and quantitative aspect, supply chain intermediaries, types of distribution channel for consumer goods, marketing channels for industrial and services, distribution channels for services with examples. What are the factors which are responsible for selection of any channel? We started this series of lectures with global supply chain, their meaning, example, and definition. We have also discussed the characteristics, and today we have discussed factors and forces affecting global supply chain management. And from notes, last lecture we have discussed global perspective from certain experts opinion. We have seen how to measure the value and effectiveness of global supply chain network, wherein we have studied the methods of evaluation, which falls into three categories: conceptual, instrumental, usage related. This was the definition, which in the end we have discussed. These are the short notes and brief questions.